Hi everyone, very good evening and welcome to BYJU'S exam prep. My name is Alpa Sharma and I hope everyone can hear and see me clearly. Today, we have a very important session where I'll be sharing my uh, tips that are needed to master, absolutely needed and recommended to master English language section if you're preparing for CLAT 2024. So everyone who's watching me live, if you could quickly confirm that I'm clearly audible and visible, we shall commence with the session. Hi Tulika, good evening. I hope I'm clearly audible and visible to you. I have a lot of things to share with you since I've been associated with teaching CLAT aspirants for many years, over a decade. And with all the experience that I've gained, specifically teaching English and critical reasoning, I have a few things in the back of my mind which I keep sharing in bits and pieces, but I've compiled them together in today's session. तो आज डिटेल में बात करेंगे उन चीजों की जो आपके लिए करना बहुत जरूरी है अगर आप ये सेक्शन मास्टर करना चाहते हो क्लैट के लिए तो उनकी बात करेंगे यस आई एम ऑडिबल ओके तो जल्दी से एजेंडा देख लेते हैं सेशन का एजेंडा क्या है एजेंडा ये है कि हम बात करेंगे एक जल्दी से क्विक ओवरव्यू 2024 आई एम सॉरी का सिलेबस क्या है और क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए और हम बात करेंगे प्रिपरेशन टिप्स आपकी 2024 के प्लान के लिए तो बहुत डिटेल में बात करेंगे स्पेसिफिकली इस चीज की क्या चीजें हैं जो आपको करना जरूरी है बहुत जरूरी है जिसके बिना शायद सिलेक्शन होना थोड़ा अनसर्टेन हो जाएगा सो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट बट बिफोर दैट one, if you're targeting CLAT 24, I'm coming live on 21st of May, 6 p.m. on our app. This is a free workshop for everyone who's targeting CLAT 24, where I'll be sharing the short strategies that I have experienced over the many years that will work for one to grab a seat in your dream NLU. Catch me live. Don't miss out on that workshop. Also, we've launched our CLAT 24 comprehensive course. If you wish to enroll yourself for our program, this is the number of our counselors. You could call them and know more about the program and the details. And last but not the least, we have our scholarship test happening on 28th of May, 11 a.m. So if you sit for the scholarship test, you can earn thousands of scholarship and then you can enroll yourself for our batches as well. So make sure you sit for the scholarship test. Do not miss out on that 28th May, 11 a.m. ठीक है बात करते हैं क्लैट की एक जल्दी से क्विक ओवरव्यू 2 मिनट में आपको मैं बता देती हूँ बिकॉज आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दैट एंड देन विल बी हाई हेल्पिंग हैंड एंड देन विल बी फोकसिंग ऑन द इंग्लिश सेक्शन स्पेसिफिकली so CLAT is a common law admission test which you are supposed to sit for अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो ठीक है ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम करवाते हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं और रफली 22 एनएलयूज हैं जो क्लैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं प्लस 1 एनएलयू है जो आपका AILET के थ्रू एडमिशन लेता है दैट्स एनएलयू दिल्ली सो टेंटेटिवली वी हैव 23 एनएलयूज वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे हैं इनमें एडमिशन के लिए हम मेजरली क्लैट और एलेट का एग्जामिनेशन देते हैं ठीक है अब ये एग्जामिनेशन लॉ एंट्रेंस का जो आप देते हैं इसमें we roughly have 5 sections. तो इन 5 sections में से मेरे जो डोमेन है these are logical reasoning and English. ये मेरे डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं. These are the hi Ashok, good evening. These are the sections that I predominantly teach and talk about. आज मैं सिर्फ इंग्लिश सेक्शन की बात करूंगी डिटेल में जो कि लास्ट कुछ सालों से 30 मार्क्स का आ रहा है एग्जामिनेशन में वी ऑल्सो हैव जीके लीगल रीजनिंग क्वांट लॉजिकल रीजनिंग कमिंग एज पैराग्राफ बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल बट प्रीडोमिनेटली वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन सो ये 150 मार्क्स का जो पेपर है इसमें से 30 मार्क्स का इंग्लिश का आपका सेक्शन होता है ओके और फॉर एवरी करेक्ट आपको 1 मार्क मिलता है फॉर एवरी इनकरेक्ट आपको 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाता है ठीक है सिंपल और देर आर मल्टीपल सिटीज जहां से आप ये एग्जाम दे सकते हो ये सब चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं एजेंडा पे आते हैं एजेंडा है हमारा अब इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के बारे में कि ये जो 30 मार्क्स का पेपर है मैं इस सेशन को अब 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी वन आई बी टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली इस सेक्शन में आता क्या है ठीक है और फिर हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे कैसे एंड व्हाई विल आई फोकस सो मच ऑन आता क्या है इन दिस सेक्शन And that is because if you do not know what comes in the examination, how on earth will you be able to prepare for that?
So we first are going to be talking about analyzing about what exactly comes in the examination. So in the English section, for some reason it's 2025 written. So we're targeting for 2024. Last 2-3 सालों से एक specific pattern has emerged in the entire paper, including the English section. Okay. Uh, Hi Bhavishya, hi Priyanshi, hi, good evening. Acha guys, abhi to I'm giving you generic information. The moment I jump to strategies, make sure you keep asking me questions, okay? Specifically pertaining to CLAT 2024 and English, so that I'm able to answer those questions simultaneously. क्योंकि also I would want you to save this session क्योंकि आप अगर एवरी मंथ आके वापस रिविजिट करते हुए सेशन को यू कैन इंश्योर दैट आप उस ट्रैक पे हैं जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करें, जो कि इंश्योर करेगा आपका सिलेक्शन। तो इसको सेव कर लेना वीडियो को, लेटर ऑन हर महीने एक बार आके रिविजिट कर लेना वीडियो को, ठीक है। सो इंग्लिश सेक्शन में लास्ट 3 सालों से, और यही मेरा एक्सपेक्टेशन है क्लैट 2024 के लिए भी जो आएगा आपके पेपर में, हम रफली 6 reading comprehension देख रहे हैं that comes up in English. We see timeline for current affairs in CLAT. Bhavishya, we're discussing English, बच्चे. Okay. So, okay. So, but if you're asking कितने से कितने month का करना है, आपको December to December का करना है, GK. If that's what you're asking. 6 RCs we've seen coming up in one section for 30 marks in English. Per RC, 400 to 450 to 500 words per RC. One RC, that is reading comprehension, will have 5 questions. The types of questions I'm going to be discussing in the second half of the session. So what I know now is that I'll have at least 5 to 6 RCs. Per RC will have 5 to 6 questions. Total marks will be 30. In how much time should I be able to solve these 30 questions is tentatively a set of, let me write that here, tentatively 25 minutes at max. So you don't have even 1 minute per question, okay? And you have to read 6 passages, for that matter of fact, within 25 minutes. Answer all 5 questions that are dependent on that passage as well. Now, if that is what comes in the examination, what do I recommend? That's the gist of the session. So, एक एक करके बहुत डिटेल में बात करते हैं। जहां क्वेश्चन हो प्लीज हैंड टू हैंड मुझसे पूछ लेना। प्रेपरेशन टिप्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंग्लिश में क्या आएगा, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। नाउ व्हेन आई से क्या आएगा, आपको पता है 5 आरसी आएंगे मैम, 6 आरसी आएंगे मैम, और ये आरसी हमको 25 मिनट्स में सॉल्व करने, आपने ऑलरेडी बता दिया ये चीज। When I talk about what comes in the examination, I also talk about the type of questions that come. There's a specific pattern that we've seen that has emerged in the last few years with respect to the types of questions. We can easily divide them into a lot of inference-based question, sometimes tone of the author question, sometimes figure of speech type questions. We have a lot of main idea, as many as 5 questions per year on main idea. So short ही 5 marks आपके पॉकेट में होंगे अगर आपको मेन आइडिया ढूंढना आता है तो। So main idea, many questions. Maximum weightage is given to either this kind or this kind of question. Sometimes you have factual questions or specific idea based questions as well. So you have to know exactly किस टाइप के questions आते हैं एग्जाम में जिनकी मुझे प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज आरसी क्लैट में भी आएगा, आरसी आपके बोर्ड्स में 10th में भी आया था, शायद 12th में भी आएगा, पर दोनों के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है ना। क्योंकि उनमें डिफरेंस है, आप उनको सेम तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, आप उनको सेम अप्रोच के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। सो प्लीज ध्यान दीजिए किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो अल्टीमेटली आरसी आएगा, बट इनडायरेक्ट ग्रामर, इनडायरेक्ट वोकैब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। नाउ the first thing that I want you to focus on is please build a very, very good vocabulary. It has to be stellar. Kaise, ma'am, is the timeline 1 year, ma'am, for current affairs? Yes, Bhavishya. Yeah, 1 year.
current affairs. But remember, Bhavishya, since you're constantly asking me, I would like to reply to it. Current affairs is not restricted to 1 year's timeline. Uh, it goes beyond that. We have a lot of static coming up, which is related to the current affairs. So you have to know that as well. Okay? Back to it. Build a good vocabulary. अगर आपकी vocabulary poor है, आपको RC ही समझ में नहीं आएगा. 1 साल पहले क्लैट में एक पैसेज आया था, 2 साल पहले, अवार्ड्स गिवन पॉस्ट्यूमसली. अब आपको अगर पॉस्ट्यूमसली का मतलब नहीं पता तो मैं पैसेज कैसे समझ में आएगा ऑन अर्थ? You need to have good vocabulary to be able to understand the passage. If your vocabulary is weak, you will not be able to comprehend. 2, direct vocabulary questions are plenty. Plenty. क्योंकि direct vocabulary questions इतने आते हैं हर साल, तो वो तो आपको आंसर करने ही है, साइमल्टेनियसली आपको पैसेज समझना भी है. उसके लिए आपकी vocabulary अच्छी होनी चाहिए. vocabulary कैसे करनी है, कहां से करनी है, I've had some sessions on that. आज मैं उसकी बात डिटेल में नहीं करूंगी, बट रिमेंबर, आपको रैंडमली डिक्शनरी उठा के vocabulary नहीं करनी है. You need to be okay with the commonly used words like जो न्यूज़पेपर्स में यूज हो रहे हैं, जो हमारे आरसीज में यूज हो रहे हैं, जो क्लैट के आरसी में यूज हो रहे हैं, उनके सोर्सेज में यूज हो रहे हैं. You have to be okay with high frequency words. Okay? All right. So, the first thing. Second pointer. Again, focus on, please be familiar with the kind of questions. So either you come to the classes where we discuss the kind of questions, or you work on your own and figure out the pattern that has emerged. Also focus on those type of questions कि मुझे ये questions within 25 minutes कैसे solve करना है. Because remember, CLAT का पूरा paper, it's a matter of your understanding, it is a matter of your speed as well. Main idea अगर का एक question आ गया exam में, and I give you half an hour for 1 RC, तुम guarantee main idea निकाल लोगे, तुम 4 बार पढ़ लोगे उसको. Okay? So, if you read that multiple times, you will be able to find the main idea, all the inference, you'll be able to find everything. But can you do that in the actual examination? Can you read that multiple times? You cannot. Since you cannot read that multiple times, please work on understanding the pattern of question and what should your approach be towards solving that specific kind of question. I have taken many classes on main idea, inference-based questions. You can just search, skim through our YouTube channel and find those. Okay? Otherwise, subscribe to our channel. We'll come across with more such sessions. Did you hit the like button yet? If you haven't done that, please do as well. Third pointer. देखो, grammar direct question कुछ सालों से आया नहीं है, ठीक है? Ma'am, when I read Hindu newspaper, their vocabulary are very much high level. I can't understand it properly. Ashok, देखो, very very good question. Thank you for asking me. मैं थोड़ा सा bluntly answer करूंगी इस चीज को. Okay, please do not be offended. Take my advice as your guru's advice. देखो, बहुत सारे passages जो क्लैट में आते हैं वो हिंदू से आते हैं, और हिंदू के ही डिफिकल्टी लेवल के आते हैं. अब आपको डील तो उसी डिफिकल्टी लेवल से करना है जो आपको हिंदू में मिल रहा है. जिस तरीके के वोकैबुलरी वर्ड्स आपको हिंदू में मिल रहा है, आपको डील उसी से करना है. तो इसका मतलब देयर इज नो एस्केपिंग. आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए और उन वर्ड्स को रोज 10 वर्ड्स मैक्सिमम, 10 से ज्यादा नहीं करना, बट 10 वर्ड्स याद करते जाइए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल आपको वही मैच करना पड़ेगा. सो हाउ डू यू इंप्रूव इज दैट यू कीप finding 10 words, Ashok, that are common. You've seen them multiple times. आपको शायद उसका एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं है, बट मैंने सुना है, ये मैम क्लास में बोल रही थी, इस आर्टिकल में देखा था, मुझे शायद इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं है. उन वर्ड्स को निकालिए अशोक, लिखिए और याद कीजिए. Is 4-5 months enough? बच्चे लोग 1-1 महीने में भी करते हैं ना प्रिपरेशन. 5 महीने में तो आप ग्रेविटी ढूंढ के निकाल सकते हो. ये कैसा क्वेश्चन है? 5 months are ample, considering the fact you have a strategy in your mind. If you don't, you are very likely to waste these 5 months in the preparation of your board exams. You have to figure out a plan for yourself to look up. Back to it. Grammar direct hasn't come in quite a while, but it can come back again. Please make sure you are very sincere with your school teachers teaching you grammar. ठीक है? ध्यान दो वो क्या पढ़ा रही है. 500 स्पीच एक बार रिवाइज कर लो. 2 दिन लगेंगे बट ग्रामर आ जाएगी. अगर 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो 2 नंबर पे तो एनएलयू ऊपर से नीचे हो जाता है ना.
So make sure you work on grammar as well. Pointer number 4, eclectic reading. तो हिंदू पढ़ो, हिंदू पढ़ो, हिंदू पढ़ो, सबने बोला होगा ना हिंदू पढ़ो, हिंदू से ही आएगा जो आएगा, हिंदू तुम्हारा गुरु है। नो, हिंदू पढ़ो बट एक्लेक्टिक पढ़ो। एक्लेक्टिक का मतलब अलग अलग सोर्सेज से पढ़ो। ओके, अलग अलग सोर्सेज से। मैं कुछ सोर्सेज आपको रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि जरूरी है सिर्फ पॉलिटिक्स पे आए पैसेज, जरूरी सिर्फ एजुकेशन पे आए पैसेज, जरूरी है सिर्फ करंट अफेयर्स पे आए पैसेज नहीं। पैसेज बहुत सारे एरियाज से आ सकते हैं। अगर पैसेज बहुत सारे एरियाज से आ सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से आ सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स से आ सकते हैं, तो मुझे उन टॉपिक्स और सोर्सेज के साथ कंफर्टेबल होना है। आई कांट जैसे मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। ओके, सो बैक टू इट, कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, कुछ सोर्सेज रेकमेंड करती हूं मैं आपको। यू कैन रीड फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस फॉर श्योर। यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम द aeon.co, wired.in, scroll.in, of course the Hindu. You can read from the Indian Express. You can read from the New York Times, the Guardian. All of these sources are for free, apart from the newspapers. You can refer to all these sources, but keep reading. Northhill.us. These are some sources that you can recommend, that I can recommend that you should follow. Okay. मैम ड्रॉप लेने का मन हो रहा है। ड्रॉप बिना क्लैट लिए? क्लैट तो दो पहले, अभी तो 5 महीने बचे हैं, उसके पहले ड्रॉप कैसे कर सकते हो? बट अगर क्लैट नहीं देने का मन कर रहा तो अभी इज द राइट टाइम, मत दीजिए। अगर आपका अभी मन नहीं करा तो बाद में बिल्कुल नहीं करेगा। आई बी वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, माई सजेशन दैट यू शुड फॉलो, प्लीज एटलीस्ट रोज 2 RC सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कहां से? हमारे ऐप से, प्रीवियस ईयर पेपर से, सारे ऐप में अवेलेबल हैं। क्लैट के, ALH के, SLAT के, JMI के, सब में RC आते हैं, है ना? तो एटलीस्ट 2 RC तो रोज किया करो, उनको सॉल्व करो हमेशा टाइम बाउंड, और सॉल्व करते हुए while you solve it and once you're done with it, please rectify your mistakes. देखो क्या गलती करी, क्या करेक्ट आंसर था, क्यों था, आपको उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मिस्टेक से नहीं सीखोगे, आप कभी भी इंप्रूव नहीं करोगे। यू कैन नेवर इंप्रूव। प्लीज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग मेन थीम क्वेश्चंस करेक्टली, फिगर आउट व्हाट इज दैट यू डूइंग रॉन्ग, व्हाट शुड बी द कंसेप्ट दैट शुड बी एप्लीकेबल टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, रेक्टिफाई देम अगेन, सी अ पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स दैट यू बीन डूइंग। एनालिसिस बहुत जरूरी है of the mistakes that you do. So at least 2 RCs every day, highly recommended. मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स, इसका कोई तोड़ नहीं है। देखो ये इतना जरूरी है। क्लासरूम्स और कोचिंग अपनी जगह है, लेकिन जो बच्चा ये नहीं देता उसका सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने रियल लाइफ प्रैक्टिस करी नहीं है। ठीक है, तो आप क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। बट जब तक आप उसको टाइम बाउंड एक रियल लाइफ सिनेरियो में 2 घंटे बैठ के 150 नंबर का पेपर नहीं सॉल्व करोगे, यू वुडंट बी एबल टू अटेम्प्ट द एक्चुअल पेपर। सम पीपल माइट थिंक अभी तो मेरा कोर्स ही नहीं हुआ है, 2 महीने और रुक जाता हूँ फिर दे दूंगा। आप बहुत लेट हो जाओगे, तब तक लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इज इंग्लिश सिलेबस द सेम फॉर ALET एंड CLAT? भविष्य, partly yes, although in ALH you have 50 marks of English coming up, and last year you had 9 RCs coming up. Also, the kind of questions that came up in the RCs were different to the kind of questions and the passages that came up in CLAT. So if you look at the course, yes, both the exams give us RC, but it's not as simple as that. The kind of questions are different, the kind of passages are different, the approach is different, the marks allocation are different. Everything is different here between both the examinations. The only similarities is that both the examinations will give you RC in the English section. Back to it, please take your mock tests very sincerely. Students that come to our classes, they have
Do all law entrance exams have same English syllabus? No, Priyanshi, no. CLAT has RCs, but JMI 1 RC, a lot of grammar. MHCT 1 RC, a lot of grammar and vocabulary. So not all law entrance exams have same syllabus. Mock test लो, ध्यान से solve करो. If you come to our classes, the batches that we have, people have already given 2 to 3 mocks. They are sitting for 1 mock every 15 days. आप अगर सोच रहे हो कि मैं 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, वो आपसे 4 मॉक आगे हो जाएंगे. आप 4 मॉक एक दिन में भी दे सकते हो, बट यू विल नेवर बी एबल टू बीट देयर स्ट्रैटेजी. द सूनर यू स्टार्ट, द सूनर यू रियलाइज दैट मॉक्स आर इंपॉर्टेंट, द बेटर इट इज फॉर यू. क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रगल ही होता है पेपर अटेम्प्ट करने का. याद रखना, उस 2 घंटे में वो पेपर कैसे करना है, ये बहुत बड़ा कैच है क्लैट में. ये आपको पता होना चाहिए. A few things that I would additionally recommend. One, please पढ़ो, रोज पढ़ो. You need to have 1 hour dedicated to reading. रोज. उसके बिना इसका आपका नहीं नाव पार लग सकती. You will have to read every day. Every day. The sources, remember I had recommended in the previous slide. So read 1 hour daily, solve 2 RCs daily. Solve past year papers thoroughly, in detail. Better if you solve them time bound. Take them as mock tests, even better. Specifically CLAT 2020 to 2023. Solve them time bound. इसके पहले के पेपर आप ब्रेक करके solve कर सकते हो, जीके छोड़ सकते हो उनकी. You can do only 1 RC, solve the grammar later on. But please solve and analyze the previous year papers. Seek guidance. We are here for you. If you wish to enroll for our program, that's the number of our counselors. Otherwise, we come live on our YouTube channel and our app every day. You can catch us and ask us for guidance. That's going to be all for today, everyone. So, I'm taking a free workshop on what should your strategy be to get that dream college, dream NLU seat. If you're targeting CLAT 2024, workshop कब होगी? 21st of May, 6 p.m. Sunday. रजिस्टर करना है पहले, उसके बाद ही अटेंड कर सकते हो वर्कशॉप. ऐप में होगी, रजिस्टर कर लो, ऐप डाउनलोड करके, देन यू कैन वॉच मी लाइव. CLAT 2024 के लिए प्रोग्राम चाहिए? That's the number of our counselors. Speak to them, know more about the program. We also have a scholarship test going on 28th of May, 11 a.m. You can register yourself for this test. The link is there under my video in the description box. Mock tests are important, very, very, very important, Tulika. There's no escaping. Okay? Best book, previous year papers. Best book for grammar, Wren and Martin. Best book for vocabulary, newspapers. कुछ additional लेने का need है नहीं, सब कुछ available है. Novels, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की. aeon.co पढ़िए, nautil.us पढ़िए, और वो सारे सोर्सेस पढ़िए जो मैंने आपको बताया. वहीं से पैसेजेस बनते हैं. नॉवल में जाने का अभी टाइम शायद नहीं है आपके पास इतना. इफ यू लव नॉवेल्स, यू कीप डूइंग दैट. बट इफ यू डोंट, मत करो एक्सपेरिमेंट. उन सोर्सेस से पढ़ लो जो मैंने रेकमेंड करे हैं. डोंट लीव द सेशन विदाउट हिटिंग द लाइक बटन. Don't leave the session without commenting under the video if you're watching the session recorded. Don't leave the session without subscribing to the channel. You can also follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and you can download our app on Google Play. All the links are there under my video in the description box. I hope all your questions were answered today. I hope you've had some insight on how to prepare. Save the video, keep watching it every month so that you ensure that you're on the right track. Have a very good evening, everyone. God bless you. Ma'am, for critical reasoning, it is necessary to practice daily passages. I would recommend, Bhavishya. I would recommend. Agar daily nahi bhi, if you don't do it daily, every alternate day or maybe once in 3 days, certainly need it. Okay? Thank you.